Hello and Assalamu alaikum. Welcome to CxO Global Forum. As you all know, that CxO Global Forum is a knowledge sharing platform. We bridge organizations into greater exposure within their respective industries. Today, we have a very respectable guest who is also one of our member, Mr. Noman Siddiq. Assalamu alaikum, Noman. Thank you so much for your time. Walaikum salam, Sidra. Thank you for having me on the show. थैंक यू। अच्छा नोमान, सबसे पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करेंगे। आपकी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताएं कि कहाँ से पढ़ा और क्या पढ़ा। एजुकेशनल जर्नी इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स कराची से किया था। अच्छा। ओ लेवल्स में भी मैं हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। ए लेवल्स प्राइवेटली किया था एंड देन साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कंपनी हियर इन कराची व्हेन आई वाज 16 एंड हाफ और 17 इयर्स ओल्ड। उसके ओके। बाद मैंने साथ साथ 2-3 साल बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। एक्सटर्नल प्रोग्राम था उनका, आई थिंक सेफरचायर यूनिवर्सिटी का। हम्म। तो मैं वो यूनिवर्सिटी से भी हाँ कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था बैक इन 2009। That failed in 2011, another business that failed, and in 2012 another business that sort of kicked in well. तो ओके। वहाँ से जब जर्नी शुरू हुआ तो वो हो गया। So you're but you look still young. So how old are you now? I'm 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 young at heart, to be honest, but to give a number, I'm 37 years old. Okay, okay. So I thought you're still like in the university phase or something. अच्छा नोमान, तो फिर आपने फिर अपना ये बताएं कि what are you doing currently और यहाँ ये कैसे start किया, अपने करियर के बारे में बताएं. राइट। सो जब मैंने करियर स्टार्ट किया था 17-18 साल की उम्र में, तो आई वाज वर्किंग फॉर अमेरिकन कंपनी। तो माय जॉब वाज टू फाइंड आउट यूज डिफरेंट टूल्स टू Okay, आइडेंटिफाई डेटा okay, और फिर उसको सेल्स ऑटोमेशन टूल्स में डाल के सेल्स अपॉइंटमेंट सेट करने होते थे मेरे मैनेजर के लिए। जिम बर्जेस अच्छा, नाम था, ही अच्छा, वाज फ्रॉम न्यूयॉर्क। And I was 18 and a half, and I realized that the data that we're collecting or getting from the platforms like Dun& Bradstreet or हम्म, Hoover's back then, CxO, Zoom Info, वो इतना accurate नहीं था। अच्छा, That's when I suggested Jim that we should start a customized research team where okay, we sort of employ people in Pakistan, and हम्म, whatever data we get from these platforms हम इसको डबल चेक करें, उसके बाद हम इन पे कॉल करें या इन पे ईमेल रन करें। तो दैट sort हम्म, of turned out to be a success. By the age of 2021 I was heading a team of 20 plus people in the same okay, company, अच्छा, and that's when I realized कि इतना potential है इस industry में। Data is the new uh, black gold, हम्म, as I call it, that we हम्म, should focus on. तो उसके बाद मैंने ओके, कंपनी स्टार्ट की ईलिस गाय के नाम से, that eventually अच्छा, got rebranded with a new name called Cloudlead by the ओके, end of 2016. और उस ओके, कंपनी में we sort of grew by the end of 2020, yeah, and we ओके, secured customers like PayPal, FedEx, SAP, हम्म, that sort of helped us fuel the growth organically. Yeah. ओके, वेरी नाइस। अच्छा नोमान, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, करियर और एजुकेशनल भी। मुझे ये बताएं कि यू हैड एनी इंस्पिरेशंस इन योर जर्नी व्हिच मेड यू टू डू ऑल द स्टफ यू डूइंग, और जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और इंस्पायर किया। Yes. So the first and foremost person who really pushed me to get into this was my father, because I ओके, was having double thoughts कि यार करें ना करें, फंस गए तो क्या होगा। So my father was one of the guys who said yes, go for it. As far as inspiration is confirmed, back then startups were a new thing, and every time reading something about startups was an inspiration in itself. Be it Facebook, be it LinkedIn, be it Tinder, be it any app or any platform that was coming out, was an inspiration in itself. So I think bits and pieces अगर ले तो मार्क जकरबर्ग से हो गया, रीड हॉफमैन के आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, हर जगह से इंस्पिरेशन आती रही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चैलेंजेस अगर बात करें, चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर करियर, जब आप क्लाउड बीट को बन कर रहे थे, इसको बना रहे थे, या अभी भी द चैलेंजेस यू फेस राइट नाउ? The challenges that I face right now, for the love of Pakistan, I've always had a team in Pakistan. We अच्छा, have somewhere close to 100 plus people working for us in Pakistan.
and we Okay. have anywhere from 20 to 30 people working from remotely from the US, Canada, Dubai, and even India. Okay. The main challenge that I face in Pakistan is finding the right resource, training them, educating them, creating more awareness on how businesses perform outside of Pakistan. There's no concept of selling in Pakistan. Okay. यहाँ आज भी हम बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि if you want to sell something, run ads on Facebook or LinkedIn या Hmm. इधर उधर Yeah, ads yeah, run yeah. कर दें, Google AdWords, PPC कर लें. But that's Okay. not how selling works in the US. Okay. Interestingly, I was meeting a lot of companies last week. Hmm. Uh, 3 out of 11 companies I met are shutting down because they were dependent on Upwork for generating business. Okay. And my main perspective was, why are you selling on Upwork? Because एक तो competition बहुत ज़्यादा high है. दूसरा, competition high होने की वजह से per hourly rate या whatever the project price is, that goes down. Okay. Uh, Most of the companies I met have never ever tried selling directly to the end users. Maybe let's say pick up the phone, find, create a list of data, contacts from anywhere. Internet is your best friend. Yeah. Pick up Yeah. the Yeah. phone, True. call them, email them, send them a very customized message on LinkedIn on the value that you can add on to their business operations. तो Hmm. वो प्रोसेस अभी तक यहाँ नहीं है. There's a lot of friction between the selling process. Sales and marketing alignment is missing in Pakistan. Companies do have Yeah. no, absolutely no clue कि उन्हें करना क्या है. लोगों को लगता है, I was in excuse me, I was in Canada Hmm. coalition conference में, तो वहाँ पाकिस्तान का बूथ था. I met a lot Okay. of guys from Islamabad, Karachi, Lahore, and there's one thing that I Hmm. still cannot digest is कि वहाँ पे उनको लीड्स आई थी, बट क्योंकि उनके पास सेल्स मैकेनिज्म नहीं था पीछे, तो वो लीड्स को Hmm. फॉलो अप नहीं किया, लीड्स एंगेज नहीं हुई और Hmm. सेल नहीं कर पाए. That's one of the biggest Hmm. challenges that I think uh, is for many companies in Pakistan. So, तो what do मेरे you suggest? Do you have any suggestions to how to overcome this challenge? Yes. I've been trying to reach out to Pasha, Pakistan Software Housing Associations. जिस वेब से मेरी बात हो रही है. I'm also in touch in sort of speaking terms with Trade Development Authority from Karachi. Okay. We're trying to propose a plan where I share my sales playbook with the companies. So company कोई भी हो, as long as they're Hmm. selling or exporting to any company outside of Pakistan, Hmm. वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए एक सेल्स प्लेबुक होनी चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, Hmm. जिसको यूटिलाइज करते हुए यू बिल्ड अ सेल्स पाइपलाइन. अब सेल्स Okay. साइकिल 3 से 9 महीने की हो सकती है, इवन 12 महीने की हो सकती है. इट टुक मी 18 months to close PayPal as a customer. Okay. But then Okay. again, we had a process in place that allowed us to rigorously, religiously follow the process and keep, sort of following up with PayPal के कॉन्ट्रैक्ट का क्या Hmm. हुआ, कब होगा. दो True. तीन Huh. सब्सिडी सिंगापुर के, बट वो फॉलो प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस पूरा एक प्लेस में था, तब जाके हमें वो मिला. तो वो प्रोसेस और Hmm. वो प्लेबुक जो है ना, मैं शेयर करने के ऑन द वर्ड ऑफ शेयरिंग इट विद पाशा. एंड देन वी Okay. प्लान टू sort of create, host a meetup with all the Hmm. technology companies that are exporting outside of Pakistan, even the textile companies, क्योंकि उनको भी Okay. सेलिंग प्रोसेस की ज़रूरत है, सेल्स टीम की ज़रूरत है कि वो Okay. अपने contract secure कर सकें. But there's no quick Same. fix. One thing that I Hmm. don't like about many people, many entrepreneurs of Pakistan is उनको लगता है कि आज हमने डेटा लिया, आज हमने मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स की सब्सक्रिप्शन ले ली और सेल्स ऑटोमेशन टूल्स की सब्सक्रिप्शन ले ली, कल कॉलिंग शुरू कर दी, परसों सेल हो गई, 10 लाख, 1 लाख, $2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आ गया. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. आज अगर हम चलेंगे तो इट्स गोना टेक एनीवेयर फ्रॉम 2 to 6 months कि आपकी एक ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी अलाइन होगी, और Hmm. उससे थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू कम होता है. You become a brand, and then you start direct selling to the end user via LinkedIn Hmm. outreach, via email, via phone, and even Hmm. sometimes you send out swag gifts to those customers, potential customers. That's an investment. Okay. और 8-9 महीने के अंदर जाके एक सेल आपकी एक SDR क्लोज करता है. जब वो प्रोसेस Hmm. रनिंग में आ जाता है, Hmm. then there's a sale almost Hmm.
every week as we speak. But वो process बनाना और चलाना ज़रूरी है. Do I make ट्रू. sense? यस यस यस, बिल्कुल सही है. और बट आई थिंक ऑब्वियसली सेल्स वाली चीज़ बहुत वास्ट है उसमें. कुछ लोग कंपनियां कर रही हैं जैसे पाकिस्तान में, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा टाइम लगेगा और स्लो एंड स्टडीली इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी. मेरा इंशाल्लाह. आपके साथ बस लास्ट क्वेश्चन है नोमान के अगर आप कुछ कहना चाहेंगे सीएक्सओ ग्लोबल फोरम के लिए. CxO Global Forum के लिए I just joined in, so I don't have any uh, valuable feedback. I ओके. yet need to explore the forum, meet members, other members, and figure out कि क्या है मेरे लिए नेट. So I don't have any Okay. valuable I feedback. I'm wish trying you to all the best understand because any. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. I wish you all the best. हम लोग if you go on our LinkedIn page, so I have been interviewing so many other members also. So they have been saying कि वो काफी अच्छा, they feel very good. They are in groups and it's interaction. So it is very you will be interacting with more people. So eventually you'll feel the spirit और वो सब चीजें आपको नजर आएंगी फोरम में जैसे जैसे आप आगे जाहिर आपका टाइम गुजरेगा. इंशाल्लाह. तो थैंक यू There's सो one मच. thing. जी. There's one thing I want to add over here, Sidra. Sidra, मेरी सोहेल भाई से भी बात हुई थी. I spoke to him and I said, there's a taboo subject. Mental health के नाम से एक subject है जो बहुत taboo है. I've met, ओके. I don't know, in the last 2.5 months, I met anywhere from 30 to 35 founders of different companies. ओके. And I felt कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन का एक एलिमेंट मौजूद है. uh, they're not ready to take the next risk to take the company to the next level. I think उसको ओके. address करना बहुत ज़रूरी है. So मैंने सोहेल भाई से बोला था कि इसके ऊपर भी एक आई थिंक वी शुड होस्ट सेशन हो. समथिंग अराउंड दिस ये सेशन हो, ताकि लोगों के पास अवेयरनेस आए, वो इस टैबू सब्जेक्ट को बिल्कुल. नॉर्मलाइज करें एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प. बिल्कुल एज वी स्पीक आज बिल्कुल. ही मेंटल हेल्थ का इशू वेरी ऑब्वियसली सैडली. हर जगह हर चीज में है. हर जब मैं इंटरव्यू करती हूँ लोगों से, जब बात करती हूँ यहाँ पे इंटरेक्ट करती हूँ, तो जब मुझसे वो पूछती हूँ कि चैलेंजेस या इंस्पिरेशंस, सो ये सवाल ही कुछ इस तरह के इनसे ही रिलेटेड होती है ये चीजें. व्हेन यू फेस चैलेंज यू ऑटोमेटिकली यू विल बी हैविंग एंजाइटीज एंड so this is how it is या business mein. So definitely your suggestion is very good, and inshallah Sohail said and I will look into it. So thank you so much for your time, Noman. you're welcome, Sidra. Thank you for having me on the show. Thank you everybody for watching, and I hope कि सबने आज हमारे इस सीक्स टू टॉक से कुछ लर्न किया होगा. So thank you so much everyone for watching. इसी के साथ ही हमारी आज की ये टॉक खत्म होती है. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. Thank you, Sidra. Thank you. Okay, अल्लाह हाफिज.